क्या कर रहा है यार? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सामने सर, सामने मैम, सामने सेंटर सेंटर। इधर राइट में, एक सेकंड, इधर राइट सर, सेंटर सर, सामने थैंक यू। पीछे आजा, फोटो नहीं मिलेगा। निकल। बहुत अच्छा सर, एक मिनट पीछे हो जा रहे। सर 2 मिनट क्या करना पड़ता है सर, 1 सेकंड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Actually, we've just entered. We want to know what exactly is happening here, but all we're expecting is lots of party, lots of dhamal, lots of masti inside. See? Just to have fun, yeah. Yeah. My fashion statement is most of comfort. It's all about comfort. If it's comfortable, you have to. We as models and actors are supposed to make things look good. That's our job. So, जो दे दो पहन लेते हैं यार और क्या. Yeah, same comfort. Yeah. आप देख ही सकते हैं. मैं सिर्फ comfortable होकर That's not comfortable. That's not just comfortable. It is the most comfortable I could see in my wardrobe. So पहन के आ गई हूँ. Okay, it's been a long time and you know your fans are waiting for you. So like any upcoming project you would like to share with us? यार प्लीज दुनिया खोल दो. सारी रिलीजेस रुकी हुई है. थिएटर्स एक बार खुलेंगे. Our film is about to release, so we are waiting for a film release to happen. Waiting for the next movie to go on floor. So yeah, it's all about this thing. And otherwise, yeah, production wise, yes, lots of things happening. So hopefully things will move very soon. So film, I think सारे fans को पता ही है. It's a romantic comedy. जिसमें अविका भी है, मैं भी हूँ, and Pratik Gandhi is there. 3 of us are there, and it's a Varanasi based film, and it's a fabulous film. We can talk more about it when the promotions start. Season 15 है. नहीं अरे नहीं वो एक स्टेटमेंट है, इसका फेवरेट हमसे ना हो पाएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो आई थिंक एवरी ईयर वी कॉन्टम्पलेट कि हाँ ना, लेकिन इस लाइक उसकी डेयरिंग नहीं हो पाती है. तो Any of your friends who is going to be in the I've heard Rakesh is going to go back again, if I'm not Yeah, wrong. yeah. Rakesh might go back again, and then I think Karan is going. Karan Kundra. देखा सारी खबरें यहाँ पे है यार. मुझसे क्या पूछ रहे हो? हाँ क्या बोल रहे हो? और आगे नाम बताओ. Who else is going? So yeah, that's about it. Yeah. Thank you so much. आज की शाम बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि एक तो हम लोग पेंडेमिक के बाद आज मिले हैं सारे फ्रेंड्स. सो मिलके सबसे बहुत अच्छा लगा. और फैशन आई बिन लिविंग फॉर 20 years. सो फॉर मी इट्स वेरी एक्साइटिंग नाइट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मैनी फैशन फेसेस टुनाइट. फैशन का मतलब मेरा है कि जो लीडर होता है वो फैशन फॉलो करता है. इट्स सेट्स द ट्रेंड्स. सो मेरा फैशन है कंफर्ट, लुकिंग कंफर्टेबल and being sporty at the same time, being stylish and something which is in trend but shows your personality. So आपके फैंस भी आपको देखना चाहते हैं, किस तरह के शोज में आप नजर आने वाली हैं? एक्मे भी आ रहे हैं, इसमें आप नजर आ सकते हैं. अभी मैंने अभी बेबी डिलीवर किया है तो शी इज़ नॉट इवन वन. So I will not be working for entire fashion week, but I'll be doing couple of shows. So you will see me in some shows, but probably next year I'll be back. Thank you.
ले रहा है सामने पीछे चले जाते चलो सही है बस बस आगे मत चले बस चलो स्टार्ट फ्रॉम राइट बोथ ऑफ यू लुक सेंटर सर यहां पे सेंटर बाय राइट 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 सर क्लोज थोड़ा क्लोज राइट चलो पीछे चलो वहां पे करें वहां पे साइड हो जा साइड लेट देम कम इन साइड हो जा लेट देम कम दिस साइड इट इज बाय कमिंग ये साइड दे कट करना हां चलो साइड हो जा लेट देम कम इन लेट देम कम गिरा हुआ थैंक यू यार सबसे पहले तो मैं शाकिर को 23 साल से जानता हूँ. शाकिर इज गेटिंग डेजिग्नेटेड टू अ वेरी अमेजिंग पोस्ट इन फैशन टीवी. तो मैं उसके खुशी में शामिल होने आया हूँ. हम उसके खुशी में शामिल होने आए हैं. और बहुत दिनों के बाद मैं अपने करीबी दोस्तों से मिलने वाला हूँ. मैं पवित्रा को कह रहा था कि आज मुझे आना है क्योंकि मुझे जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ उनसे ही मिलना है. तो आई थिंक वील हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन, नॉट मच, क्योंकि हम बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं और मैं आजकल सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करता हूँ. तो I know Shakir through Ijaz, of course, so all the very best to him and heartiest congratulations because the designation that he has got. So really happy for him. एक मिनट, वो पंखा इधर घुमा ना, थोड़ा आगे ले गया, वायर भी है. परफेक्ट, गिर गया, पकड़ के रख. करेक्ट, थैंक यू. मॉडलिंग की है. बहुत कुछ याद आता है. मैं अभी एक एड फिल्म के लिए बात कर रहा था गाड़ी में और मुझे उसके 1/4 पैसे मिलते जो मुझे तब मिलते थे. तब बहुत अच्छे पैसे मिलते थे. तब मैं सबसे मेरी पहली ऐड थी क्लोरमेंट की. 5 एड्स का कैंपेन था वो. तो यार याद आती है, लेकिन तब बहुत कम लोग थे, कंपटीशन भी बहुत कम था, तो हमने बहुत खाया था. मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पवित्रा जी ने भी मॉडलिंग से अपना काम शुरू किया था और वो रैंप मॉडल थी. वो इस वक्त पंखे को देख रही हैं, लेकिन हाँ. अच्छा मत कर यार, मत कर. क्यों इनके बाल उड़ा रहा है? घुमा दे उसको वापस.
I started my journey again with modeling only. बहुत दिल्ली में बहुत modeling करती थी with all the big designers. I was blessed. तो हाँ अच्छी exciting days थे. ये नहीं पता था कि फिर I'll end up with this being a part of FTV event. तो yes, मजा आता था मेरे को modeling भी करने fashion में, बनना है। rap box में. आप लोगों की फैशन की अगर बात की जाए, जैसे कि काफी स्टाइलिश लग रहे हैं आज आप दोनों, आप ब्लैक में, तो क्या स्टाइल मंत्रा है आप दोनों का? स्टाइल मंत्रा क्या है? मतलब क्या फॉलो करते भाई मैं तो जनरली जो भी कंफर्टेबल हो वो पहन लेता हूँ। इस इवेंट के लिए स्पेसिफिकली आदित्य मेरे दोस्त हैं दिल्ली में, आदित्य सचदेव, उनसे मैंने ये कपड़े मंगाए तो बस। और बाकी आई थिंक मैम शी हैज़ अ वेरी यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ herself. शी विल एलैबोरेट. Yeah, always just stand out in the crowd. This is what I believe in. If you know that a crowd is following a specific dress code, always just transform yourself in a different style. Show the people what you haven't wear till now. Show the people what they love about you wearing. So this is what I always follow. Be unique. You want to join us? Please come. Thank you for getting me in, allowing me in. Sorry, ma'am. Yes, please, ma'am. No, please. I'm sorry. No. So, we wanted like someone who could apt and be a great synonymous with fashion and being popular. It's about being once popular. There's a lot of other people who are very popular, but carrying their popularity with a fashion pandering. We have a fashion power couple with us, and welcome aboard. Welcome here to Fashion TV. Thank you. Yeah, and who could say that they are not fashionable? That's आज जैसे कि आपने कहा मैंने अपने डेज मॉडलिंग के डेज स्टार्ट किए थे, आज किस को एक्सपेक्ट करी है पुराने अपने दोस्तों को अंदर मिलने के लिए? See, it was a way back thing. Yeah, I don't know कि अभी. ये बचपन में मॉडलिंग करती है. Yeah, actually I was in Bachpan. So I am really not expecting anyone, but I'm expecting everyone because I almost forgot a few of the people who I used to do the ramp with. So let's see कौन आके आज surprisingly hi बोलेगा hi. सुनना, अभी इसके बारे में बात करते हैं, काम के बारे में आराम से बात करते हैं. Let's just round it up. I'm very happy that I'm here. हम बचपन में फैशन टीवी देखते थे. Yeah. Allowed नहीं था कभी कभी. I was a big fan then, and I'm a big fan now. Yeah. And I'm a big fan now, and I'm so happy that I'm a part of the And we event. are so happy to have you on Thank you so much. with us. And welcome. Please Thank you. come. Maybe. Please come. अरे डन. You expect me to answer in Hindi? I've forgotten all my Hindi. No, so it's really good. I'm really excited, and I'm looking forward to being associated with FTV. We've had a long relationship. We've been shot for so many years on the runway. We've done a lot of, they've done features on us as well, very elaborate features on us. And so yeah, it's really nice to be here. The office space looks amazing. I'd love to come to office. My office look like this every day. So yeah, that's exciting. Okay, talking about Big Boss season 15, Sahil Shroff is going to be the participant in the show. Is the confirmed? Who is Sahil Shroff? I don't know who Sahil Shroff is. Who is he? Oh, the model Sahil Shroff, is he? Oh, is it? Good luck. I wish him luck. I think he'll do well. He's a fun guy. I didn't realize that he was. So, what do you think? How can he perform inside Big Boss? I mean, well, he'll have to speak Hindi, so that's I think that might be a little challenging for him. But I think he'll do well. He's a fun guy, So. Do you think he can be successful in entertaining contestants? I don't know. It depends, and honestly, it's very difficult to say who does well, who
you know, the audience is like. It's a very personal thing, you know. Someone may find you amazing, and they may find you cute, and they may find you entertaining, and then on the other hand, they may find you irritating, you know. And so there'll always be haters, and there'll always be people who like you. But in terms of an enduring quality, I don't know. It's very difficult to say. It changes from time to time, I believe. And also the thing is, with the show heavily edited, you know, you don't know what's being shown or how much is being shown outside of what you're actually living on a day-to-day basis. So what happens is they don't show all of it. So the audience is seeing, you know, honestly, a very small bit of what actually happens or how much you actually do. So, and they rarely show the nicer stuff, you know, the things that when you're being nice to someone or being kind to someone or being friendly with someone. So if they show a track where you're fighting with someone, then they catch that track and they run that the whole season. So it's very difficult. It's so heavily edited. So, you know, the audience is seeing, they're judging you on something so small. So in terms of liking and not liking and being endearing, it's like, it's difficult, you know. Like, you'll have different age groups also that will really enjoy you, and then certain age groups that just won't. So it's difficult. You know, I actually did. I went back, I think, on season 10 as a guest, you know, as a guest on stage on one of the weekends. But other than that, no. I mean, like, going back and forth in the house, I think there's only few contestants who've just gone back and forth all the time. It's not the format of the show, and honestly, I don't know. I don't find that interesting to have someone like Vikas. He's very sweet and all of that, but he's like there almost in every season now, and so it can be a bit boring as well after a point, because you want to see new people, right, in every season. So I'm not sure about that bit, and honestly, I mean, you know, it's not like it's not something that you find for a lot of people. Also are so stuck up with the, you know, they're like they stay friends with the whole crew and the thing, and a lot of people want to constantly be going back. So there's that pressure. If I'm asked, who knows? But I don't find the thing interesting, the format interesting. I think it should just be new people every time, and you know, the audience should see new people. Thank you. लेफ्ट में लेफ्ट Akanji on your right. Come here. हाँ तुम तो बहुत सही हो इधर इधर सातमा जी चलो बाइट करते हैं आइए फ्रेम में सातमा जी हैं हमारे यार आई एम जस्ट हैप्पी बिकॉज मैं भी रिसेंटली 15 डेज के कश्मीर स्केड्यूल के बाद आ रही हूँ, तो आई थिंक मुंबई आके दिस इज माय फर्स्ट इवेंट, सो आई एम वेरी हैप्पी फाइनली अपने लोगों से मिलके, लाइक टू बी इन लाइक अराउंड योर पीपल. आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड दैट टू फैशन टीवी. सो यस, See, definitely, I love fashion, and for me, मैं हर चीज़ में fashion ढूंढ ही लेती हूँ. And I think fashion, according to me, is something that talks about Akanksha. मतलब मुझे देखते ही वो fashion, it should be my statement, should be just about me. Fashion for me is about like being me, being real, and that's why I always try. And मुझे experiment करने में मज़ा आता है. And I feel I am somebody who can try anything and I can carry anything with confidence. Right, Big Boss season 15 आ रहा जी. है. कौन है आपके दोस्त, किसको सपोर्ट करने वाली है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटेड
I think I am really happy that because मैंने OTT follow किया and like one of my favorite has like won the trophy Divya, and apart from her I like Nishant and Prateek, तो मुझे उनका game बहुत अच्छा लगा था and I'm looking forward कि और कौन नए लोग हैं, and definitely this is Salman Khan and obviously the double तड़का था इस बार Karan and then Salman, so I'm quite excited. I'm looking forward for the first episode. सॉरी मैंने इनका क्वेश्चन पहले सुना. रजनीश के साथ जो मेरी वेब सीरीज आई है मैं उसी के लिए शूट करके आई हूँ कश्मीर. सो इट्स अबाउट रियल पीपल, रियल स्टोरीज से इंस्पायर्ड है वो स्टोरी. तो आई थिंक इट्स अबाउट लोगों को मैं शायद आज कश्मीरी गर्ल बहुत ज़्यादा पसंद आई आफ्टर माई सॉन्ग. सो हियर आई एम प्लेइंग अ कश्मीरी गर्ल. Besides that, also there Yeah. are so many other projects which are. यस मैं मेरा रणदीप हुडा वाला जो शो था जो पहली मैंने वेब सीरीज साइन की थी वो ऑलमोस्ट इट्स लाइक रेडी. सो नाउ और आई हैव शूटिंग फॉर 4 अदर सीरीज. सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. आई थिंक आई एम रियली एंजॉइंग OTT. यस थैंक यू सो मच. कोई बात नहीं, अब तो पूछिए. आपने पूछ लिया वो बढ़िया. बस 2.2 मैंने करियर की शुरुआत की थी एंड सिंस देन वी बीन लाइक ऑफ एंड ऑन इन टच विद ईच अदर एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी फॉर पीपल अराउंड मी हु डू गुड and he's also happy for people who are around him doing good. So it's a good celebration for him to be a part of Fashion TV, and that is what we are here to celebrate for. And I'm so glad that I could see the office and it looks really beautiful and it looks really nice. The interiors, the designing has been, they've done a fab job. So I'm really happy for them. I congratulate them and I wish them all the very best. But as you said, you have started your career as a model. Correct. आज किन किन लोगों से अंदर मुलाकात हुई और कोई पुराना फ्रेंड मिला जिससे लंबे समय बाद मुलाकात हुई? No, actually, Shakir is one of the people who I've, like I said, कि ये मेरा पहला fashion show था 2014 something, 7 years back when I started, and he had done my first fashion show, and that's how we know each other. But yes, apart from that, of course, for 7 years he knows each and everyone out there from the fashion industry, and I belong to acting field, so I have a different stream altogether. Okay, soon, फैशन की अगर बात करें तो Yeah. आप किस तरह के फैशन को फॉलो करते हैं? मैं किस तरीके का whatever comes to me and makes me feel nice and I would say desirable and comfortable, that is something that I wear. As you can see, I'm more comfortable in this whatever I can. एंड आपका वेब शो भी आने वाला है, अगर उसकी अगर कुछ बात बताना चाहेंगे. वेब शो का मैं इतना ही बोल सकता हूँ, it's for a known platform and I've been told not to speak about it, but the shoot is happening in Goa and I'll be busy shooting for like good 40 days and it's a very good show. I'm looking forward for it. So yeah. इसके अलावा सॉन्ग है, एल्बम है आपका, जी, जी. उसके बारे में कुछ बताना Actually, I have 4 songs lined up after this, and so all are romantic, heartbreaking, and everything. So I'm excited. I let's see. I mean, 3 songs out of which are very nice, and 1 song is a heartbreak song. So let's see. But hopefully, you guys will be able to enjoy it, and I hope you watched my previous song also, and I've liked it. Thank you so much. आपने शूट किया हार्टबीट सॉन्ग की बात की, आपने शूट किया कैसा था और क्या कहना चाहेंगे? बहुत हार्ट ब्रेकिंग था बहुत रोया and I'm sure you guys will enjoy the feel if you have been through it, if ever you have gone through a breakup or something of that sort. But I'm sure you guys will love the song. The songs are beautiful and the lyrics are outstanding, so I kind of got connected, so I thought even you guys will get connected. Besides that, Big Boss season 15 आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में I just wish them all the very best. That's it. Thank you. यहाँ पे
क्या अजय हो गया क्या तेरा भाई यहाँ पे भाई भाई पार्थ वेट अजय हो गया ए भाई हो गया तेरा एक मिनट सर यहाँ पे सर